क्लास रे जस्ट टिके इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस कहते देखिछ सेटा से वीडियोटा पठेइले देखिछ हां समस्त देखिछ तो सब देखिछ हां बुझी पारलो किछि बुझी पारलो ना किछि बुझेला सो नाउ we will discuss about what na that is the introduction about physics. Okay, now we will discuss about physics. So in the science means what? Now science is defined as a systematic study of nature that performed through experimentations, observations and lastly with interpretations. That means what? So anything you can do in science through experiment. Without any experiment science can never exist. Okay, suppose if you take a simple example, knife, KNIFE, knife means what? Take the example, knife means what? Not actually, no. So you know all these science related things that are always used for good humanity. लोक मान सेवार लगे जिते सब साइंस जहाँ सब बाहरी आज पर्यंत सबुड़ाक साइंस सब कम लगे लोक मान सेवा. ओके, तुम एसी हो ए फैन हो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जिते सब हो, सो दे ऑल आर यूज्ड फॉर गुड ह्यूमैनिटी नॉट टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी. लोक मान को केबे मारिबा पई साइंस का यूज करा जाए. ओके, बट सम सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश मींस स्वार्थपर. ओके, बट सम सेल्फिश पर्सन दे कैन यूज ऑल द साइंस रिलेटेड थिंग्स that can be used for good. This is the to destroy the humanity. लोक मान को मारिया पई किछि स्वार्थपर लोक साइंस रिलेटेड थिंग को सब यूज कर. ओके, सपोज मोबाइल ता कोन पई दे रखाई छी ना तुमर काम रे लागिया पई कमु जेउचे तुमर काम रे तुम बाहर अछो पाठ पढुचो मोबाइल ता तुम पई यूज करले धर बापा मां कोन के तो से कथा हला कि गले माने कोनोसी भलो मंद से जानिया. किंतु तुमे ता कोन करछो ना तुमे ताको खराब रास्ता रे व्यवहार करछो कमु जेउचे ताले तुमे ताको सेठी माने के गेम खेललानी तो कि आ कोन गलानी कमु जेउचे. अच्छा, किंतु केते चोर लोक जो माने बदमाशी से माने मोबाइल को देखले यूज करछो कोन ना देखुछन्ती एठी धर गोटे बैंक में टका उठे कि नेकी गला जंगल भीतर से फोन करी कहदा ताको ट्रैप करले जंगल मझे तक मारी ताको टका पैसा छड़े कमु जेउचे. सेटा पई कोनटा यूज करावा आपन बात लागि साइंस नाइ फॉर गुड ह्यूमैनिटी. लोक मान सेवा तुम मान सेवा लगे कमु जेउचे. सो सिमिलरली नाइफ दैट इज ए साइंस रिलेटेड थिंग्स. ओके, व्हेन डॉक्टर यूज दिस नाइफ देन दे सेव द लाइफ ऑफ सो मेनी पर्सन्स इन द ओटी माने जोटा ऑपरेशन कला कमु जेउचे ऑपरेशन थिएटर ताल ओटी भीतर से कोन करे नाइफ को यूज करे लोक मान को ऑपरेशन पे कमु जेउचे. पेटरे किछ अल्सर हेछि ताकू से काटे कि त बाहर करूछि कि कुछ लोक मान को कोन जीवन बचे दिया. किंतु बट सम व्हेन ए थीप दे कैन यूज दिस नाइफ टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी. चोरटा कोन करिवो चोरीटा धरले से तार गला का घर को चोरी करिया पई से ताकू मारी कमु जेउछि ताकू जे तुम प्रोटेक्ट कला से मारला तुम. So we say that all the science related things that can be used for good humanity not to destroy the humanity. So according to this, so science can be divided into two categories. In the previous class that I have discussed only this thing. So we say that there are two types of science. One is physical science and another one is life science. So physical science that is okay. एटा सब गोटे नोट खाता करियो आ गोटे प्रॉब्लम खाता करियो से नोट खाता रे जहाँ सब पढ़ेबी ताकू नोट रे लिखि दबो एको आगे रफ रे लिखि ने नोट उठे दबो. प्रॉब्लम खाता जो गोटे करियो प्रॉब्लम जहाँ सब करि दे प्रॉब्लम खाता रे उठे दबो मुझे होचे. So we say that all the science related things, so science can be divided into two categories, physical science and life science. So physical science means what? The science which is based on the basis of non-living objects. जो साइंस का डेवलप करछि on the basis of non-living objects जहार जीवन नाही सेटा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ता ऊपर जो साइंस का डेवलप करछि सेटा कहछि फिजिकल साइंस. मोबाइल ता बाहर छि कोठु ना फिजिकल साइंस एटा गोटे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. The science which is developed on the basis of living objects that is called what? Life science or biological science. Life science that is the suppose तुमे सब जेते सब आज एग्रीकल्चर ऊपर डेवलप करिछि कमु जेउचे तुमे देखो तो छोटिया छोटिया गछ उडा करे बहुत माने तो पिजुली गछ छोट साइज पिजुली गछ गुडा पिजुली होछि कमु जेउचे बड़ बड़ साइज ताले सेटा कोन होछि ना फ्रॉम द एग्रीकल्चर. ओके, एंड दैट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम लाइफ साइंस. ओके,
So it says that this is on the basis of living objects. Again, physical science can be divided into two categories. One is physics, another one is chemistry. And the life science can be divided into two categories, botany and zoology. Okay. So now we will discuss about physics. What do you mean by physics? You write like a physics. Physics is the branch of science. Physics is the branch of science. Is the branch of science. Physics is the branch of science in which we will study. In which we will study. We will study about the relation between matter and energy. Matter and energy. In which we will study about the relation between matter and energy. So first you know what is matter. Like you write matter. Matter means anything which possess mass, which possess P-O-S-S-E-S-S-E-S, which possess mass and occupies space is known as matter. Is known as matter. So another is known as matter. So matter exists in four states. Matter exists in four states. That is solid, liquid, gas and plasma. You write energy. Energy means what? It is the ability to do some work. It is the ability to do some work. Okay, you write. So matter means what? You write this thing. Okay. So matter means what? Now anything which possesses mass and occupies space, that is known as matter. Anything means what? Suppose this is, we say that it is a matter. It is which type of matter? That is a solid matter. Okay. So anything which possesses mass and occupies a space. या कोई ओजन कल यार वस्तुत्वटा केते ना 100 ग्राम and occupy space रखी देली ये उठे जगह occupy कला. So we say that it is a matter. Okay. So we say that these are which type of matter? Now that is a solid matter. Okay. So another liquid matter, water if you take, that is a liquid matter. Gas you know, that is also a gaseous matter. And the fourth state of matter, plasma. Then we discuss this thing. Okay, what is plasma? So energy means what? It is the ability to do some work. It is the ability or a capability to do some work. If you do some work due to your energy, तुम्हें जब गोटे काम करि पारछो, एठी गोटे अछि 10 केजी रो गोल्डटा ताकू कोला पर टेकिंग नै था से टेकिंग नै होनी ता घर कमु जेउचे ताल से जो कामटा करिया पाई ता देहर कोन सेटिक एनर्जी अछि. जदि गोटे 2 वर्ष छुआ को आइबो एटा नै जा बोले 10 केजी जिनिसटा नै परि उठी नै सेतल तार एनर्जी केते करता बडा एनर्जी ना जी ताले एनर्जी बॉडी को आसुची कोडू. So energy, so that is the in physics you have to study about the relation between matter and energy. So relation where you find same quantity with same quantity. Okay, that means we say that 1 kilometer equal to 1000 meter. You know 1 kilometer equal to 1000 meter. That is the relation between what? Kilometer and meter. We don't say 1 kilometer equal to 1000 gram. Can we say?
It is not possible because kilometer that is used for the measurement mapiba for the measurement of length, distance. Gram is used to measure the mass of a substance. तुम जाओ तो मार्केट को पूछो 1 kg रो माछ कि 2 kg रो माछ केही कोली 1 किलोमीटर रो माछ दियो ना नहीं. So we say that kilometer and meter they are related. Kilometer and gram they are not related. Okay, so in physics you have to study about the relation between matter and energy. Means matter is related with energy. How? Now if you take some matter inside the body that can be converted into energy. That means what? Now suppose तुम भात खाओ, डाली खाओ, क्षीर पियो, माछ मांस खाओ, एटा सब कोन मैटर. भात टा सॉलिड मैटर, क्षीर टा लिक्विड मैटर. बुझे सेटा सब जाउची बॉडी मैटर उडा. तापर तुम नउछु गैस ऑक्सीजन नउछु, सेटा सब से बॉडी भीतर कोथरे कन्वर्सन होची एनर्जी. एनर्जी रे कन्वर्सन हला पर तुम गोटे काम करि परछो. So we say that matter and energy both are related with each other. That can be studied in case of a physics. Okay, but energy can never be converted into matter. तुम्हें कहबो तुमर एटा इलेक्ट्रिक एनर्जी, एटा को मु कन्वर्सन कर दे गोटे एप्पल कर देबी, से एप्पल टा खाइबे. एनर्जी टा मैटर रे हिजो, गोटे एप्पल हिजो माने इलेक्ट्रिक एनर्जी रो गोटे एप्पल टे तयारी हो, से एप्पल टा को खाइ होबो कि नाही. Energy can never be converted into matter. So matter is converted to energy. Okay, so that can be studied in case of a physics. Okay, so again you write एटा कि मुंडर पसुची नाही बुझी परछो. तो ना सब कोन यू अलग यू हां अभिजीत भेज. हां भेज. अच्छा यू राहुल कुमार गिरी. वेयर यू कम फ्रॉम? हरबड़ा. हंगरबड़ा. ओ हंगरबड़ा आइए नहीं हां चक्कर वस्तु तो एटी लोग नहीं. तुम কথা কি বড় ইউ উঠছ মনে পাঠ পাখে নেই ইউ আসতো মনে পাঠ. আচ্ছা ভেরি গুড. তো না কোন